So today it's a short lecture and I'm going to start the discussion of vitamin B3 as we are discussing water soluble vitamins. And today the topic of discussion is vitamin B3, which is called niacin. So this is the last lecture of water soluble vitamins, a short lecture. इससे पहले हम तमाम बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी एट्सेट्रा ये डिस्कस कर चुके हैं। तो एक लेक्चर हमारा रहता था, ये आज हम ऑनलाइन जो है इसको डिस्कस करके तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। सो नियासिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड vitamin B3 and it is known as Pellagra preventing factor. This is Pellagra preventing factor. ये आगे आपको बात एक्सप्लेन हो जाएगी कि इसको Pellagra preventing factor क्यों कहा जाता है। So this is niacin. The sources of niacin are rich in animal foods. We can get niacin from animal foods. This is the structure of niacin. Pyridine ring, niacin, niacinamide. So niacin is also known as vitamin B3. Niacin or nicotinic acid is a pyridine derivative. ये स्ट्रक्चर में आप देखें पायरिडीन रिंग दिखाया गया है, फिर नियासिन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें शो किया गया है, फिर नियासिनामाइड जब दिखाया गया है तो उसमें अमाइनो ग्रुप है, CO के साथ NH2 दिखाया गया है, ये है नियासिनामाइड, इसमें अमाइड ग्रुप दिखाया गया है। So the amide form of niacin is known as niacinamide or nicotinamide, and it is synthesized endogenously from tryptophan. हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन से ये बनता है। ये नियासिन जो है विटामिन B3 जो है ये हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज हो सकता है। दिस इज सिंथेसाइज्ड endogenously from tryptophan in our body, and vitamin B6 is necessary for the conversion of tryptophan into niacin. Vitamin B6 जरूरी है इस conversion के लिए। 60 milligram of tryptophan forms 1 milligram of niacin. So 60 milligram of tryptophan is equal to 1 milligram of niacin. Active coenzyme forms of niacin. There are two active coenzyme forms of niacin which are synthesized in our liver. अब ये डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। इसमें नियासिन दिखाया गया है, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड दिखाया गया है और ट्रिप्टोफैन। ये तीनों जो हैं NAD बनाते हैं। इन तीनों से निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो कि एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म है नियासिन की वो बन सकती है। सो नियासिन और निकोटिनामाइड और ट्रिप्टोफैन can synthesize nicotinamide adenine dinucleotide. Then ATP is converted into ADP and another phosphate is added in it, and NAD is converted into NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. तो इस डायग्राम में राइट साइड पे NADP का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इन बिटवीन NAD की सिंथेसिस दिखाई गई है और लेफ्ट साइड पे वो तीन सबस्टांसेस या सबस्ट्रेट्स दिखाए गए हैं जिनसे NAD बनता है। So these are the two active coenzyme forms of niacin which are formed in our liver. NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, and NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. NAD and NADP are present in oxidized and reduced forms. ये दोनों जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और रिड्यूस्ड फॉर्म में भी, डिपेंड करता है रिएक्शंस पे। So they undergo reduction of the pyridine ring by accepting hydride ion. Hydride ion क्या होता है? हाइड्रोजन एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हाइड्राइड आयन कहा जाता है। डायग्राम में ऊपर लेफ्ट साइड पे देखें,
NAD में हाइड्राइड आयन ऐड हो रहा है तो वो रिड्यूस फॉर्म में NADH फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो NAD पॉजिटिव इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू NADH बाय द एडिशन ऑफ अ हाइड्राइड आयन. तो ये NADH बन गया. ठीक है जी, राइट साइड पे भी डायग्राम में दिखाया गया है. इसी तरह NAD जब दो हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करता है तो NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है. So these NAD and NADP are present in both forms in our body, in oxidized forms and in reduced forms. They undergo reduction of the pyridine ring by accepting hydride ion. So NAD is being converted into NADH plus H positive by the addition of two hydrogen atoms, and NADP is being converted into NADPH plus H positive by similar reaction. These are the functions of niacin. How niacin in our body in the form of NAD takes part in different important oxidation reduction reactions. So these are the oxidation reduction reactions, some of the examples of oxidation reduction reactions in our body. And here NAD is playing an important role as coenzyme. So NAD and NADP participate in more than 200 plus reactions in our body. Upper two reactions are the reactions of glycolysis, and the lower three reactions are reactions of the citric acid cycle. So glucose is converted into pyruvate, pyruvate is converted into lactate, isocitrate is converted into alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA, malate is converted into oxaloacetate, and all these reactions NAD and NADH are taking part. So these are the oxidation reduction reactions where NAD is being converted into NADH or vice versa for the completion of these reactions. So here these coenzyme forms of niacin are taking part along with enzymes. और ये तमाम जो NADH यहाँ पे बनते हैं ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके एट द एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है और ATP की सिंथेसिस होती है. अब ये जो रिएक्शंस इस स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं इनमें जो जो एंजाइम्स कैटालाइसिस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में उन एंजाइम्स को भी हम मेंशन करेंगे. इस स्लाइड में हमने रिएक्शंस और उनके कोएंजाइम्स NAD और NADH दिखाए हैं. नेक्स्ट स्लाइड में इनके एंजाइम्स को भी हम मेंशन कर रहे हैं. These are the enzymes of these reactions. Isocitrate is converted into alpha ketoglutarate and the enzyme is isocitrate dehydrogenase. Similarly, alcohol dehydrogenase converts ethanol into acetaldehyde. Lactate dehydrogenase reduces pyruvate into lactate. Malate dehydrogenase converts malate into oxaloacetate. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase converts glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglycerate. And pyruvate dehydrogenase complex enzyme converts pyruvate into acetyl CoA. So these are the examples of these oxidation reduction reactions where these enzymes take part, and along with these enzymes the coenzymes are NAD or NADH. So NAD in its oxidized or reduced form takes part in these reactions to complete these oxidation reduction reactions along with these important enzymes which are mentioned here in maroon color. Similarly, NADP or NADPH. NADP is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.
Similarly, its reduced form is NADPH. So this NADP or NADPH, these take part in these reactions along with these mentioned enzymes. Glucose 6-phosphate dehydrogenase is the enzyme of hexose monophosphate pathway. HMP शंट जो होती है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये आप सेकेंड ईयर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे. इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase. Here the coenzyme is NADP. Similarly, HMG-CoA reductase in cholesterol synthesis also plays a role along with NADP. In oil-CoA reductase in fatty acid synthesis and NADP-dependent malate dehydrogenase, then glutathione reductase. Here in this case, both NAD and NADP are taking part. In most of the examples, either NADP or NAD takes part as coenzyme, but here in case of glutathione reductase, both NAD and NADP are playing their role as coenzymes. Similarly, isocitrate dehydrogenase and glutamate dehydrogenase are the enzymes where these coenzymes NADP or NADPH are required for the completion of the reactions. So niacin has got important role in different metabolic processes in our body because its active coenzyme forms in the form of NAD or NADP or their reduced forms are required in all these important metabolic reactions. These are the biochemical functions of niacin. So the coenzymes NAD or NADH and NADP or NADPH are involved in different oxidation reduction reactions in carbohydrate, lipid and protein metabolism. As we have seen in previous slides, these important oxidation reduction reactions cannot be completed without the participation of these active coenzyme forms of niacin. So the therapeutic doses of niacin lower blood cholesterol and cause vasodilatation. If we administer niacin in therapeutic doses in our body, which is almost 1.5 gram per day, it can lower blood cholesterol level as well as it may cause vasodilatation. So in therapeutic doses, vitamin B3 or niacin is very important to inhibit or to prevent cardiovascular diseases. So this niacin in therapeutic doses lowers the synthesis of TAG in liver. It also lowers cholesterol level in LDL cholesterol and causes vasodilatation. Now, what are the causes of niacin deficiency? If the diet is inadequate, there will be deficiency of niacin. Some people or in some communities, the staple diet is maize. They depend on this diet, maize, and because of this staple diet, maize, there might be a deficiency of niacin in those communities because in maize, niacin is present but it is found in bound form and is unavailable for the body. ये फ्री फॉर्म में नहीं होती नियासिन, मेज में बाउंड फॉर्म में होती है क्योंकि इजीली रिलीज और अवेलेबल नहीं हो सकती है हमारी बॉडी में. तो जिनकी स्टेपल डाइट मेज है, जिन लोगों की मेन डाइट मेज है, जो होली एंड सोली इसी पे डिपेंड करते हैं, उनमें नियासिन की डेफिशिएंसी हो सकती है. Similarly, in pregnancy and lactation, when there is increased demand of this vitamin,
If we do not provide this vitamin niacin in the required amount for pregnant ladies or lactating mothers, there might be deficiency of vitamin B3 or niacin. Similarly, chronic alcoholics may suffer from its deficiency. And in case of vitamin B6 deficiency, as we know, tryptophan will not be converted into niacin in our body. There will be deficiency of niacin. So in case of vitamin B6 deficiency, there might also be deficiency of niacin. So these are the causes of niacin deficiency. Now the condition which occurs because of deficiency of niacin is called pellagra. So pellagra is the problem or the disease which occurs because of deficiency of niacin or vitamin B3. Deficiency of niacin leads to the clinical condition pellagra, which means rough skin. Pellagra is characterized by 3 Ds. आपने ये 3 Ds याद रखने. 3 Ds का मतलब है dermatitis, diarrhea and dementia. Dermatitis होती है inflammation of the skin. Diarrhea you know all, and dementia is the loss of memory. So these 3 Ds should be remembered in case of pellagra, and pellagra is because of deficiency of niacin. So dermatitis, in this case bright red pigmentation occurs which later turns dark, resulting in disfiguration of the skin. Skin की पहले रेड पिगमेंटेशन होती है, फिर डार्क हो जाती है पिगमेंटेशन और स्किन डिसफिगर्ड हो जाती है. ये आपको फिगर्स में भी मैं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट फिगर में भी दिखाऊंगा. तो ये डर्माटाइटिस है और ये एक करेक्टरिस्टिक है pellagra का. द सेकंड वन इज डायरिया, माइल्ड टू सीवियर डायरिया will take place having blood or mucus. तो डायरिया में माइल्ड टू सीवियर डायरिया हो सकता है इसमें, और इसमें ब्लड और म्यूकस भी हो सकता है. सो इन केस ऑफ डिमेंशिया देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इरिटेबिलिटी, डिलीरियम एंड पुअर मेमोरी. तो डिमेंशिया के ये साइन सिम्टम्स होते हैं. इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इरिटेबिलिटी होती है, मेमोरी पुअर होती है, डिलीरियम होता है. ये तमाम जो साइन सिम्टम्स हैं ये डिमेंशिया की है. तो 3 Ds आपने याद रखनी है इन केस ऑफ pellagra. 3 Ds शुड बी रिमेंबर्ड. अगर आपको ये 3 Ds याद होंगी तो आप इसको बता सकेंगे कि pellagra में क्या होता है. एंड pellagra इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 विच इज नियासिन. बाज लोग इसमें 4th D भी इंक्लूड करते हैं जो कि डेथ हो सकती है इन केस ऑफ severe deficiency, और जब उसको ट्रीट भी ना किया जाए, ठीक भी ना किया जाए, तो फिर डेथ भी हो सकती है. डेथ में ऑल्सो टेक प्लेस. These are the 2 conditions or 2 diseases which are associated with pellagra. This is Hartnup disease and carcinoid syndrome. ये 2 diseases हैं जिनका एसोसिएशन होती है, ताल्लुक होता है. These are related with pellagra. क्योंकि हार्टनप डिजीज में भी ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में. मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन जब हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होगी, डिक्रीज होगी, तो ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, नियासिन की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर इसमें भी pellagra लाइक सिम्टम्स होंगी. तो हार्टनप डिजीज है या कार्सिनॉइड सिंड्रोम है, ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों डिजीजेस, ये दोनों पैथोलॉजीज जो हैं, दीज आर रिलेटेड विद pellagra, दीज आर एसोसिएटेड डिजीजेस ऑफ pellagra. तो pellagra का इन डिजीजेस के साथ ताल्लुक है, रिलेशन है, एसोसिएशन है. अब इसमें देखें, इस डायग्राम में, इस फिगर में, इस पिक्चर में बाइलेटरल सिमेट्रिकल रैश है.
बाइलेटरल सिमेट्रिकल रैश है दोनों लेग्स पे, और ये सनलाइट एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, और ये प्लेग्रा में होता है, और ये इट इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग। प्लेग्रा में जब नियासिन की डेफिशिएंसी होगी, रफ स्किन होगी, तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल रैश होता है, और ये सनलाइट एक्सपोजर में ज़्यादा हो जाता है। तो दिस साइन ऑफ प्लेग्रा इज़ रियली वेरी डिस्टर्बिंग। सिमिलरली इस डायग्राम में भी देखें, जहाँ जहाँ स्किन की पिगमेंटेशन हो रही है, डिसफिगरेशन हो रही है, अपर चेस्ट में, नेक एरिया में, फोर आर्म्स में, हैंड्स में, इवन लिप्स में, फेस के कुछ एरियाज में आप देख सकते हैं कि ये जो पिगमेंटेशन है, डार्क पिगमेंटेशन है, स्किन की डिसकलरेशन है, ये डर्मेटाइटिस के साइंस है। तो 3Ds में से 1D जो है वो ये है, डर्मेटाइटिस, देन डायरिया एंड देन डिमेंशिया। So this was a brief lecture today regarding niacin or vitamin B3. With this, we have completed our discussion of water-soluble vitamins, including B complex vitamins as well as vitamin C. ये कंप्लीट हो गया है। इससे पहले आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो विद दिस आपका जो बायो केमिस्ट्री का सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।